Hello students, today we are at lesson number 6 and we are going to understand adverbs. Before we understand adverbs, हमारे prerequisite lessons हैं nouns, adjectives, articles, pronouns और verbs. यानी adverbs के बारे में जानने से पहले आपको इन सब के बारे में बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए क्योंकि ये सब करीब करीब एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं. Now if we understand what adverbs are, अगर हम adverb समझने की कोशिश करें, आप ध्यान से देखोगे तो adverb के नाम के अंदर ही verb है. verb यानी क्रिया और adverb को हम हिंदी और गुजराती में कहते हैं क्रिया विशेषण. ऐसा शब्द जो हमें verb के बारे में ज़्यादा information देता है. So an adverb is a word that adds meaning to the verb and tells us more about it. सो वर्ब को ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाता है क्योंकि ये शब्द वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एडवर्ब्स कैन ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. सो कभी कभी एडवर्ब्स क्या करते हैं, हमें विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. देर आर अ टोटल 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. टोटल 5 प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. वन बाय वन हम समझेंगे ये अलग अलग प्रकार के एडवर्ब क्या है. सो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर. इसे हाउ एडवर्ब भी कहा जाता है क्योंकि वाक्य में जो भी वर्ब होता है, क्रिया होती है, अगर उसको ढूंढ के हम प्रश्न पूछते हैं हाउ, तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाता है. सो ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है. इट टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. मान लो कोई लड़का दौड़ रहा है और हम कह सकते हैं वो लड़का बहुत ही तेज दौड़ रहा है. तो दौड़ना एक क्रिया हो गई, लेकिन तेज जो है, फास्ट, वो हो जाता है एडवर्ब. लेट अस नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स. शी रैन क्विकली टू कैच द बस. सो इन दिस सेंटेंस रैन इज द वर्ब. हाउ डिड शी रन? क्विकली. So quickly is an adverb. He spoke softly to avoid waking the baby. Softly is an adverb which is modifying or telling us something more about the verb spoke. So how did he speak? Softly. The dog barked loudly in the park. How did the dog bark? Loudly. The children played happily in the sunshine. How did the children play? Happily. The old man walked slowly across the street. How did the old man walk? Slowly. Now if you observe something, हर एक एडवर्ब के पीछे ली लगा है. इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई शब्द के पीछे ली लगा के हम उसको एडवर्ब बना सकते हैं. ये बात भी सही है कि ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं उनके पीछे ली लगता है. स्लोली यानी धीरे, लेकिन फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं है. सो अगर हमें स्लोली का ऑपोजिट बोलना है फास्ट, तो सिर्फ फास्ट होगा, फास्टली मत बोलिए. लेट अस लुक एट सम मोर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ब्रेवली, स्वीटली, पोलाइटली, वाइजली, फास्ट, एंग्रीली, केयरफुली, suddenly and eagerly. So if you wish, you can make some more sentences using these adverbs for a better understanding of adverb of manner. Try to connect all of these with a verb. Let us now look at the next type of adverb, which is adverb of place. इसे where adverb भी कहा जाता है. Why? Because it tells us the location, direction where an action is done. So मान लो क्रिया कहाँ हो रही है. ये लड़की ऊपर जा रही है, ऊपर जाने की क्रिया है, तो वो ऊपर जा रही है. कहाँ जा रही है? ऊपर. So ऊपर हो जाता है क्रिया विशेषण. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. The cat sat lazily on the windowsill. Where did the cat sit? Windowsill. So windowsill is an adverb. The keys were left somewhere on the table. Where were the keys left? Somewhere. Somewhere is an adverb. The children played outside in the yard. Where did the children play? Outside. She looked around anxiously for her lost wallet. Where did she look? Around. The bookshelf stood firmly against the wall. Where did the bookshelf stand? Against.
the wall. So against becomes the adverb. Now if you observe closely over here, in the first sentence we also have one more adverb. The cat sat lazily. How did the cat sit? Lazily, which is adverb of manner. And then we have one more adverb in sentence number 4, which says she looked around anxiously for her lost wallet. So how did she look around? Anxiously. That is adverb of manner. And then we have one more sentence similar. The bookshelf stood firmly against the wall. The last sentence. How did the bookshelf stand against the wall? Firmly. So firmly is एडवर्ब ऑफ मैनर. सो देयर इज नो कंपल्शन कि एक वाक्य में एक ही एडवर्ब हो सकता है, एक से ज्यादा एडवर्ब हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेम प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के एडवर्ब्स भी हो सकते हैं. कुछ और एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं. हियर, देयर, एवरीवेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, नियर बाय, अब्रॉड and anywhere. So these are some more examples of adverbs of place. If you wish to practice, you can make some more sentences connecting these adverbs with a verb. The third type of adverb is adverb of time. So what does this tell us? It tells us when or at what time an action is done. क्रिया कब होती है, कितने बजे होती है, कौन से समय पे होती है, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है. इसे व्हेन एडवर्ब भी कहा जाता है. सो जब हम क्रिया जब है उसको क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन, तब हमें ये वाला एडवर्ब मिलता है. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. शी विल अराइव टुमारो फॉर द पार्टी. व्हेन विल शी अराइव? टुमारो. वी यूजुअली गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. व्हेन डू वी गो फॉर अ वॉक? इवनिंग. The concert starts at 7 p.m. 7 p.m. When does the concert start? 7 p.m. They visited their grandparents last weekend. When did they visit their grandparents? Last weekend. And I may finish my homework before dinner. When may I finish my homework? Before dinner. So these are all examples of adverb of time. Now if you look at the second sentence, there is one word usually. That is also one kind of an adverb which we are going to see when we look at other forms of adverbs in our future class today. So let us go ahead and see some more examples of adverbs of time. Today, yesterday, early, late, soon, now, later, and it could also be days of the week, month or year or maybe time. So if you wish to practice more, इनका इस्तेमाल करके आप और वाक्य बना सकते हैं और इसे verbs के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. Let us now look at the next adverb of frequency. How many times? So जो अगली वाली स्लाइड में हमने देखा usually शब्द, वो यहाँ पे सेट होगा. वो भी एक एडवर्ब था. कितनी बार, क्रिया कितनी बार होती है. इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन. सो दिस इज वेरी सिंपल. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. ही ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क. हाउ मेनी टाइम्स डज ही ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क? ऑलवेज, हमेशा. दे समटाइम्स गो टू द पार्क ऑन संडेज. How many times do they go to the park on Sundays? Sometimes, kabhi kabhi. She rarely misses her morning yoga routine. How many times does she miss her morning yoga routine? Rarely. We often meet for coffee on Fridays. How many times do we meet for coffee on Fridays? Often. The bus never arrives on time during rush hour. How many times the bus does not arrive on time? Never. Let us look at some more adverbs of frequency. Daily, seldom, regularly, once, twice, 100 times, many times, or frequently. The last type of adverb is the adverb of degree, also known as how much adverb, and it tells us the degree and the proportion of the action.
क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही थका हुआ है तो हम कहेंगे बहुत थका हुआ है। बहुत हमें उसकी डिग्री या फिर उसकी मात्रा बताता है। ये वाला एक पर्टिकुलर एडवर्ब ऐसा है जो करीब करीब मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करता है इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द verbs. Let's look at some examples and have a better understanding of what I'm trying to tell you. She is very happy today. अब happy जो है वो एक adjective है और ये हम प्रश्न पूछेंगे happy को, वो कितना खुश है? बहुत खुश है. So very over here is telling us more about the adjective happy. He is quite tired after the long journey. How much tired is he? He is quite tired. The next is the water is too cold to swim in. Okay, so how much cold is the water? Too cold. They were almost late for the meeting. So how much late were they? Almost late. The movie was extremely boring. How boring was the movie, or how much boring was the movie? Extremely boring. Let us look at some more adverbs of degree. Fully, most completely, totally, partly, absolutely, least, and slightly. So, thank you very much for attentively listening to the lecture. Download the worksheets for practice, and your next lessons should be conjunctions and prepositions. See you in the next lectures.